Professor Pravesh Swaha sir will continue session 1. And now I welcome Pravesh Swaha sir. Please continue your lecture. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And very good afternoon to all of you who are joined here. I am here to present a small presentation in front of you. Uh, I am very less experienced faculty in front of you all, and I try to present the things which I have some experience about that in front of you. If you found any correction or any suggestion, please welcome to all. So now I start my presentation. So in this session, we will discuss about the fundamentals of internal combustion engine. As we know, there is a basic the engine with the energy converting machine, which convert the one form energy into another form. So this is called heat engine. Heat engine is a machine which converts heat energy, which is basically developed after the combustion of fuel, to mechanical work. And this work is utilized to do some useful work or to move some vehicle or from another form. Heat energy is supplied to the engine by the burning of fuel. If we understand what is actually happening with the fuel, that first we consider the chemical energy of fuel. The fuel like petrol, diesel, and coal all contain some type of chemical energy. And after combustion, this chemical energy is converted into heat energy. And this heat energy is further will convert into mechanical work. This is the fundamental of heat engine. So if you want to classify the engine, then there are two categories: internal combustion engine, which is basically called IC engine, and the other is external combustion engine, which is called short form EC engine. In IC engine, combustion of the fuel takes place inside the engine cylinder, so that this heat energy is developed and is further converted into another form. This is like in diesel engine, petrol engine, and gas engine. Gas engine means LPG or CNG, anything. In other way, external combustion engine, where the heat energy is developed outside the engine cylinder and further it is converted into useful work, like steam engine and steam turbine. You all know that steam engine, where the steam is working with same phenomena, but this steam is generated outside the engine cylinder, so that it is called external combustion engine. Same it is in steam turbine also. Steam turbine is also can be the example of external combustion engine. We further classify that IC engine. So we can categorize in two forms. The first, on the basis of cycle. On the basis of cycle, there are two forms. The one is two-stroke cycle engine, and the second one is four-stroke cycle engine. So, if you understand what is the meaning of that two-stroke or four-stroke, in IC engine, the one movement of piston from top dead center to bottom dead center, or bottom dead center is called one stroke. If an engine generated two strokes to complete one cycle, so what is the meaning? Understand that what is the meaning of one cycle? The one cycle means the all possible process combinedly, and after completion, it will again restart. That procedure is called one cycle. If we are saying in IC engine, which type of process contain one cycle? So we can say that
Whether the engine is 4-stroke, 2-stroke, diesel, or petrol, it mainly contains four processes. These four processes, one is the second one is compression, third one is expansion or power, and the last one is exhaust. These four processes combinedly called one cycle. If an engine take two stroke or two piston movements to complete these four processes, it will call two stroke engine. An engine takes four strokes or four movements of piston to complete these four processes, so this is called four stroke engine. Similarly, according to the fuel, there are three types of engine: auto cycle engine, diesel cycle engine, and dual cycle engine. Yes, diesel is also called. Yeah. Auto cycle engine means in this cycle is based on auto cycle, and it is taking petrol as a fuel. In case of diesel engine, there is a diesel fuel used, and it is based on diesel cycle. Diesel cycle is also called constant pressure cycle, and petrol engine is also called constant volume cycle. As per the heat addition taking process. In auto cycle, the heat addition takes place at constant volume. In case of diesel engine, the heat addition takes place in constant pressure. So this is also the name of another name for that auto cycle or diesel cycle. In dual cycle, the heat addition takes place first at constant volume and then secondly at constant pressure. So it is called dual combustion engine. As it, I've already told that fuel use: petrol fuel, diesel fuel, and gas fuel. The fourth category, we can say that categorized on the basis of ignition. The auto cycle is a spark ignition engine because ignition takes place after the spark. But in case of diesel engine, the ignition takes place just on the high pressure, just because of high pressure and high temperature. So it is called combustion ignition engine. That means CI engine. Diesel engine is CI engine, and the petrol engine is called SI engine. The fifth category is a cooling system. Generally, we know that there are two types of cooling system. The first one is air cooled. That's like our bikes, motorcycles. Generally, air cooled engines. And the other category is water cooled engine, where there is a space provided around the engine in the form of water jacket, and the water is circulated around the engine and taking the heat from the engine parts. The sixth category is valve location. There is another category which is basically divided according to the position of inlet and exhaust valve. So the position of inlet and exhaust valve basically depend on according to the position of head, engine head. Engine head is a component which is exactly mounted above the engine cylinder. So above the engine cylinder, this head is basically bolted with engine cylinder. So in head, the position of valves, right? It is whether it is L head, T head, I head, F head. If we say it is head, that means it is side valve mounted. That means on the side there is both the valve mounted, inlet valve, exhaust valve. In T head, we can say that the valve is side mounted but in opposite direction. So it is T head. In case of I head, it is exactly mounted on the center. If we can say F head, so one was mounted over the cylinder and another is below that. So it is called F head. So according to that, we can categorize this. Some terminology is used in IC engine for bore, which is basically diameter of engine cylinder. Top dead center is the extreme position of piston. It is the extreme position of the piston on engine cylinder. And the bottom dead center, that means it is the bottommost position of piston. That means the piston moves from top dead center to bottom dead center. It's true that I also that the one movement of piston, either it is to bottom dead center or bottom
talk about compression ratio, so the compression ratio of is a very important terminology as per the IC engine. The compression ratio is the ratio of maximum volume of cylinder to the minimum volume of cylinder. Ratio of maximum volume to the minimum volume of cylinder. So how can we define what is the maximum volume? The total volume of cylinder is the sum of the volume at which piston displaced, and after displacement, some volume remains vacant for combustion process. So the sum of that clearance volume and the stroke volume is called total volume of cylinder, which I told maximum volume of cylinder. So maximum volume means the sum of swept volume or stroke volume and clearance volume. So the total volume, maximum volume. What is the minimum volume of cylinder? After the complete displacement of piston, there is a small volume vacant, which is called clearance volume. So the ratio of this volume is called compression ratio. Similar things is mentioned in point number 6, where the cylinder volume is the total volume, swept volume plus clearance volume. Same thing I have already explained. So for if you're talking about petrol engine, so there is two category: 2-stroke petrol engine or 4-stroke petrol engine. If we talk about 4-stroke petrol engine, that means there will be 4 strokes or there will be 4 movements of piston. And I have already told there is a 4 process which combinedly called one cycle. That means if we connect these two terminologies, that means one process of cycle will be done by the one movement piston or one stroke of the piston. So it can be easily understand this 4-stroke engine. The first movement from top dead center to bottom dead center of the piston, this is called stroke number 1. In this diagram, the first power, second exhaust, third intake, and fourth compression. But we will start with third one, intake stroke. We can explain this in another sequence. So we will do it with third, fourth, 1, 2. So जो आपका third number में दिया है, the first is intake stroke. Intake stroke means the piston will move from top dead center to bottom dead center. During this movement, there is a vacuum created inside the engine cylinder. So that vacuum suck the whole charge inside the engine cylinder, which is basically the mixture of fuel and air, which is prepared by the carburetor. So this mixture comes inside the engine cylinder due to the motion of piston that creates vacuum inside the engine cylinder. This is called first process, suction process, and it is also called first stroke or suction stroke. The next one is compression. Compression means both the valves are closed now. In suction process, the inlet valve was open, but after complete suction, the inlet valve was closed and exhaust valve is also closed. So both the valve are closed and the piston moves in upward direction. So now it will compress the whole charge. Now it will compress the whole charge and comes into a small volume that is called clearance volume. At this area, at this volume space, the whole charge is collected, but at high temperature and high pressure. At the same time, there is a spark start, which start to ignite that charge. After that ignition, the kinetic energy of air fuel mixture is sudden increases, and that kinetic energy provides the power to piston to move downward, and this is called expansion process, and it is also called power stroke. This is the only stroke in 4-stroke engine which develops power or all another strokes. That means in this stroke is develops power which is utilized in further another 3 processes which is happening after that. So after expansion, there is a burnt gases resides inside the engine cylinder, and the upward movement of piston, which is called exhaust stroke or called exhaust process, removes all the gases from the engine cylinder. The same thing which I described with diagram, it is explained in this slides. Piston moves from top dead center to bottom dead center. This is the first process. In another process, the piston moves BDC to TDC. That means it is compression.
Again, from top dead center to bottom dead center. So this is called expansion or power stroke. And in fourth exhaust process, that means the whole bundle is removed from the engine cylinder and piston moves top dead center to bottom dead center to top dead center. Finally reaches to TDC, and the next cycle will start again from TDC. This is also some summary of this whole working procedure of four-stroke petrol engine, where the compression ratio varies from 5 to 8. It is the theoretical dimension is 5 to 12, but it is saying practically 5 to 8. So this this compression ratio decide what amount of power is developed inside the engine cylinder. The temperature during that process is 250 degrees Celsius to 350 degrees Celsius. According to that temperature, the whole engine is designed because of this temperature. At this temperature, the whole system will work. If we're saying that the temperature reaches to 350 degrees Celsius, that means all the piston, cylinder, and connecting rod and all the piston rings all will retain at 350 degrees Celsius. So the material should be chosen according to the condition, pressure, and temperature of the engine cylinder for the manufacturing of these components of IC engine. This is called four-stroke diesel engine. In four-stroke diesel engine, the same working as four-stroke petrol engine. There is only two difference in four-stroke petrol and four-stroke diesel. The first basic difference is that in four-stroke petrol engine, there is a mixture of air and fuel comes inside the engine cylinder, and after compression, there is a spark to ignite that mixture. These two things happen with petrol engine. Similarly, in case of diesel engine, these two things get changed. How it is changed? Then we can say during suction stroke, in case of diesel engine, only air enters into the engine cylinder. The first thing. And the second thing is that after compression, the fuel is injected in the engine cylinder, and this injection fuel is responsible for the combustion. Because after compression, the air is compressed, the high temperature and pressure is achieved. At this temperature and pressure, if we injected the spray of fuel, diesel fuel, that's enough to get start for ignition. And final that ignition, the same power expansion process occurs, and after that the exhaust process occurs. So we understand that there is only two difference during diesel engine. During suction stroke, only air enters, and at the time of spark in petrol engine, at the same time in diesel engine there is a fuel injected and combustion initiated. If we talk about two-stroke engine, it is the process of two-stroke engine is some complicated because here the same four process: suction, compression, expansion, and exhaust is occurred at two moments of piston. In four-stroke engine, it was happening four-stroke and four process. It is easy to understand. But here, on the two moment of piston, there will be four processes. That means we should consider two processes in one moment of piston. So which two processes is in one moment of piston? So first we consider the bottom position of piston, that is BDC. So we consider that the piston is resting at BDC. When it start to move from BDC to TDC, there is a two process occur. The first is suction and the second is compression. But in case of two-stroke engine, the suction process occurs in the crankcase where the crank is moving. That means the mixture doesn't go inside the engine cylinder directly. First, the mixture comes in the crankcase in suction stroke. During that stroke, the charge enters the crankshaft, this is called suction, and the another charge is resting above the piston for previous cycle is compressed. That means the suction and compression.
these two processes happening in this first stroke. Compression is bottom of piston and compression is top of the piston. After this compression, the spark is initiated and the combustion is started. The charge which is collected above the piston is ignited and hit the piston for moving downward. When the piston is moving downward, the charge which is collected at crankcase, fresh charge, this charge is supplied to the top of the piston, which is called engine cylinder. And after this expansion, the burnt gases is removed by this fresh charge, which fresh charge is entering from the one phase and the burnt gases is getting escaped from the other phase. That means in two-stroke engine, in downstroke, there is a two process. The first is expansion and the second one is exhaust. This process is going in parallel position. Expansion of gases and similarly the escape of gases. But the escape occurs due to the fresh charge that entering from the other side of the engine cylinder. So here some points become more significant. The first thing is that scavenging efficiency. Scavenging is the process in which exhaust fresh charge enters into the engine cylinder and the exhaust charge, exhaust gases or burnt gases is escaping from the engine cylinder. But if we ensure the 100% burnt gases will remove from the engine cylinder, that will cause some amount of fresh charge is also escaped out from the engine cylinder. But if we want to retain complete fresh charge in the engine cylinder, so this will cause some amount of burnt gases will left inside the engine cylinder. So the scavenging efficiency of two-stroke engine is very less as compared to four-stroke engine because the pure phenomena cannot occur. Other thing is that we are seeing that in one cycle we are receiving one-time fuel. So in case of four-stroke, we are receiving one-time fuel in four movement of piston. If we connecting the movement of piston in revolution of crankshaft, so we find the one piston movement is means the 180-degree movement of crankshaft. That means the two movement of piston is a complete one revolution of 360 degree. That means the force movement is about 720 degree. So we can say that in four-stroke engine, the 720-degree movement of crankshaft will receive one time of fuel. But in case of two-stroke engine, there is a 360-degree revolution will receive one time of fuel. So what type of concept we can assume, we can understand with this phenomena? That is, in case of two-stroke engine, the power will be doubled. The power will be doubled just because it is receiving the fuel on every one revolution of crankshaft. But this will reduce the mileage of the engine. Similarly, in four-stroke engine, the one complete revolution, the two complete revolution will get one time fuel. That means the mileage will be very good, but the power will be less. But theoretically, it is just half than two-stroke engine. And theoretically, the two-stroke engine power is just double than four-stroke engine. Some of construction features in two-stroke engine which is different from four-stroke engine. In four-stroke engine, we use valves for opening and for suction and exhaust. But in case of two-stroke engine, we use ports. Ports is basically the opening cuts in the engine cylinder. That means there is no moving element in two-stroke engine. Because of this feasibility, it is very light and compact engine. Two-stroke engine is very light and very compact engine because there is no moving parts, there is no wall mechanism, there is no cam and follower mechanism, which reduces the weight of the engine significantly. So it is very good engine as per their weight, very lightweight engine. According to power, just double than four-stroke engine.
It, it is just lacking because of their thermal efficiency or called mileage. This reduced mileage, it is currently almost हम कह सकते हैं कि हमारी जो जो सड़कें हैं उससे गायब हो चुकी हैं पूरी तरह से. टू स्ट्रोक इंजन की आज की डेट में कोई भी नई गाड़ी रोड पर नहीं चलती. It is just because of their thermal efficiency and mileage condition. So now moving in next slides, it is also we discussed. It is a complete phenomena which I have discussed. Scavenging that I told you, it is very less in case of two-stroke engine because the fresh charge is responsible to escape out the burnt gases, which is exactly there is no boundary up to which there is a burnt gases and after that there is a fresh gases. So it is mixed and there is some amount of losses we consider. There is a comparison between some engines. The first comparison between SI and CI. SI means spark ignition, means petrol engine, and CI means diesel engine. In case of petrol engine, it draws air fuel mixture into the engine cylinder, or in case of diesel engine, only air is available for suction during suction stroke. Petrol engine operate at low pressure and temperature, while the diesel engine operates at high pressure and temperature, because the ignition is only depend the pressure and temperature of the diesel engine. Pressure ranges in SI engine, the pressure ranges is 6 to 12, but in case of diesel engine, there is a high pressure range, which is 35 to 40, which is quite more as compared to petrol engine. The other one is temperature. The temperature of the petrol engine maximum reach 350 degrees Celsius, but in case of diesel engine, it reaches up to 700 degrees Celsius, which is very high temperature. Because as we know that for pure steel, there is a recrystallization temperature is 727 degrees Celsius. That means at 727 degrees Celsius, the steel is start to reform and start to change their properties, material properties. So we can say that it cannot stand, purely steel cannot stand effectively at 700 degrees Celsius. So we use some alloy, aluminum alloy, steel alloy for making engine cylinder, piston and connecting rods, etc. In spark petrol engine, it is fitted with carburetor, obviously, because it is responsible to supply fuel and mixing with air. Here, in case of CI engine, there is no carburetor because the air and fuel both enter separately into the engine cylinder. So there is no need of carburetor in this engine. The burning of fuel takes place at constant volume. I have already told that it is also the Otto cycle is called constant volume cycle because the heat addition takes place at constant volume. But in case of petrol engine, there is no constant volume heat addition. There is a constant pressure heat addition. In petrol engine, there is an electric spark which initiated the combustion. But in case of diesel engine, only fuel spray of fuel enough to get to achieve the combustion phenomena inside the engine cylinder. Just a minute. Petrol engine is, because we can say that petrol engine is quality governed engine because here the air fuel ratio is vary from 10 to 17. That means the 10 part of air and 1 part of fuel up to 17 part of air and 1 part of fuel. So we can say that the air fuel ratio is about 10 to 17. So it is quality of the fuel governing engine. But in case of diesel engine, it is basically depend on that whether the mixture is rich or weak mixture. Petrol engine is widely used for automobiles and aeroplanes. Aeroplane or automobile, we can use high quality of petrol, which is also called kerosene. In case of diesel engine, there's a diesel fuel is used for heavy vehicles such as buses, trucks,
lorries, etc. Merits and demerits, which are already in the comparison we have discussed these some points. Some points here merits. We can say that the initial cost of spark ignition engine is less, but diesel engine is more because it require more components as compared to petrol engine. In petrol engine, there is a very less noise because it is working at low pressure, but diesel engine produces more noise and vibration because it is working on high pressure. In case of petrol engine, the weight per unit power is less. That means पर यूनिट पावर के लिए कितना वेट, जो इंजन का जो वेट है उसके हिसाब से कितना पावर जनरेट कर रहा है, ये स्पार्क इग्निशन इंजन में बहुत ही कम है, जबकि डीजल इंजन में काफी ज्यादा पावर डेवलप होती है, इस कारण से ये वेट पर यूनिट पावर उसका काफी ज्यादा है. Some demerits: thermal efficiency of spark ignition engine is very less as compared to diesel engine because the diesel engine has high temperature and pressure and high volumetric efficiency, so it produces high thermal efficiency. Specific fuel consumption is more, but in case of diesel engine, there is a specific fuel consumption. That means we can say that here we working air fuel ratio 10:17, but in case of diesel engine, the ratio of air fuel ratio is up to 40. That means the 40 part of air and 1 part of fuel. But in petrol engine, maximum 17 parts of air and 1 part of fuel. The specific fuel consumption is very less in case of diesel engine. And also the last point is not significant at right current scenario because the rate of diesel and petrol is almost same. These all points almost we discussed. Some new trends which finally start in engines. We will discuss about that. The IC engine currently is able to cope with this challenge. The more the current challenges in IC engine, the first is fuel economy, because every customer wants the more fuel economy and more mileage for that vehicle, for his vehicle. So it is also the one factor that the current challenge for an IC engine. Especially this challenge become more important when the electric engine is also starts, which is giving how much kilometer in 1 rupee, or what is the rate for 1 kilometer movement for the vehicle, which is very less in case of electrical engine. So this challenge become more significant right now. The other thing is safety. Safety is always the big factor for a vehicle. The next one is exhaust emission. It is the main concern of our government or the world. Okay. The exhaust emission, because the exhaust of our IC engine is like hydrocarbons, nitrogen oxides, and carbon monoxides. These are the 3 main factors which are responsible for this environmental pollution, which is the main concern for our exhaust emission. The next one is noise and vibration. Noise and vibration is also a main factor, because if we going to purchase a car, definitely we want some with minimum noise and minimum vibration. It's like we consider the Maruti car or Hyundai car, it produces less noise and vibration. But if we go to Tata car, so that Tata car produces more noise and vibration, because the fact is that I understand that in Maruti and Hyundai, they are working basically 4-cylinder engines. Small cars, like जैसे हम आप 1000 सीसी कार खरीदते हैं मारुति की, तो 4-cylinder इंजन मिलेगी आपको. That means each cylinder contain 250 cc volume. If we go in Tata, then it is 3-cylinder. It is using 3-cylinder engine. So if we consider a 1200 cc engine, that means that each cylinder will contain 400 cc.
As the CC increases, cubic centimeter volume is increases for single cylinder, it increases more vibration and noise. So there is some technology which is working with some companies. So these are the some trends which are using to cope the challenges which have we discussed in previous slide. And these are the changes which coming. The first is cylinder deactivation in multi-cylinder. This phenomena can be occurred in multi-cylinder engine. As I told you, in Maruti Suzuki, there is a 4-cylinder engine. So cylinder deactivation means at a particular time, there is no need to work all 4-cylinder. If the requirement is less, so there is a possibility that 1 or 2 cylinder can be stopped during the working, during the starting of the engine. The second thing is that direct injection. Direct injection means if we provide the fuel to the engine directly. First, previously, the air and fuel is get mixed in the inlet manifold, then supplied to the engine cylinder. But in case of direct injection, there is a separate movement of fuel and air into the engine cylinder. The third one is variable valve timing and lift. Valve timing is basically responsible for opening and closing of valves, opening and closing time, and also the duration of opening and closing of the valve. So it can be variable, so it can be effective. The fourth one is turbochargers, which is currently using in heavy vehicles like 2000 cc vehicle or 2500 cc vehicles using turbochargers, which increase the efficiency and power of the vehicle. So we will discuss all these points in upcoming slides. सर 5-7 मिनट और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं? जी सर, ठीक है, थैंक यू. The first point is cylinder deactivation. Cylinder deactivation is one of the technology that improves fuel economy. The objective of which to reduce engine pumping losses under certain vehicle operating conditions. First, I told that what is the cylinder deactivation? That if there is a 4-cylinder engine, if 1 or 2 cylinder will stop, then engine will work and require sufficient amount of power as it is required at that particular time. But it provides certain feasibility after that, that the fuel economy that is written in this slide, the fuel economy and other objective to reduce the engine pumping losses. What is engine pumping losses? Basically, the pumping loss, if there is a very much difference between exhaust pressure and inlet pressure, at that time the fuel pump has more load to supply the fuel in the engine cylinder. This is called pumping loss. If we losing some amount of energy in fuel pump, it is called pumping loss. So we can overcome with this problem with cylinder deactivation. The next point is cylinder deactivation is a method of deactivating cylinder as per the power requirement of the engine in order to achieve better fuel efficiency as well as emission control. Obviously, if there is a very small requirement of power, the 2-cylinder will stop, then we will achieve fuel efficiency and also there is less emission in tailpipe. The next thing is that the cylinder deactivation works because only a small fraction of engine's peak horsepower is needed in main cruising speed. That means the maximum power is required. According to that, number of cylinder will work. Advantages, already we have discussed that lean combustion means we will require less amount of fuel for combustion process. Cleaner conversion, because if the 100% conversion will achieve, then carbon monoxide and hydrocarbons. Basically, carbon monoxide is developed due to incomplete conversion, and hydrocarbon is escape out from the cylinder due to no conversion. So if there is no conversion or there is an incomplete conversion, both are very drastic, very dangerous and very harmful for our environment. Okay. So this phenomena can be reduced with this deactivation of cylinder. Easy fuel burning. So in 2 cylinder there will be easy to
for the combustion process. And the last one is throttle less induction. That means the induction will be easy, and obviously the pumping losses will reduce. Disadvantage, because the working of all four cylinder is balanced due to some with some dynamic balancing, that will disturb, that dynamic balancing can be disturbed due to this deactivation. Because if there is four cylinder and one cylinder will stop, then three cylinder will work, so it will affect that balancing. Increased cost of manufacturing, obviously we have to put some electronic system which can be analyzed and apply that phenomena, which will increase the cost, increase the maintenance, and also the weight of the engine. These all points I have told. The second change which can be possible in modern engines, that is direct injection. Direct injection means the direct injection where the fuel is injected directly into the cylinder, not mixed with air in the inlet manifold. We are talking about petrol engine, where the mixed air fuel mixture goes inside the engine cylinder. But in case of direct injection, both are going at the same time but separately, not after mixing. Okay. This is called direct injection. So direct injection we are using in two methods. The previous method was MPFI, and the current technology is CRDI. What is MPFI? MPFI means the multi-point fuel injection. This multi-point fuel injection will spread out or will atomize, extremely atomize the fuel, so that the combustion will easy. So this MPFI is a technology which was using, but currently we are using CRDI. That means common rail direct injection. That means all the injector will work at same pressure. At common rail, the same pressure will applied in whole injectors. That will ease the system and also improve the working of IC engine. The profit with this technology is showing with this graph that कार्बोरेटेड वर्जन जो रेड लाइन से शो कर रहा है कार्बोरेटेड वर्जन, तो उसमें जो पावर आउटपुट था वो बहुत ही स्मॉल रेंज में अपन मिल पा रहा था. बट यहाँ पर जैसे अपन डायरेक्ट इंजेक्शन करते हैं तो पावर रेंज पूरी तरह से चेंज हो गई. दूसरा ये कि अगर आरपीएम बढ़ने के साथ एक लिमिट बाद रिड्यूस करने लगता था, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ रहा है. दैट मीन्स पावर आरपीएम बढ़ने के साथ पावर आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा. तो this can be achieved. लेकिन यहाँ पर एक ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो इसमें ECU लिखा हुआ है, that is electronic control unit is required to operate this whole system. Obviously, there will be some disadvantage. The first is the primary disadvantage: the direct injection is complexity and cost. Obviously, if we are doing this direct injection, we have to increase some components, we have to increase some parts that will make more complex system, and also it will increase the handle cost, maintenance cost, and the overall cost of the engine. The next one is variable wall timing. First, please understand what is wall timing. This is the wall timing diagram for petrol engine, 4-stroke petrol engine. Here, you are seeing that inlet wall and inlet wall closed. If we see, theoretically, we assuming that inlet wall opens at TDC and closed at BDC, but it is not practically happened. Practically, you are seeing that it is opening before 15 degree and closing after 30 degree. That means we are considering that the total duration is 180 degree of crank, but it is basically now become 225 degree of crank. That means the more time for inlet valve opening as compared to theoretical value. So this practical situation can be understood by this wall timing diagram. Similarly, the exhaust valve opening and exhaust valve closing, it's also required 30 degree and 50 degree more for exhaust the burnt gases. So this variable, coming back to the slide, variable wall timing diagram means according to the engine state, according to the combustion phenomena, okay? According to combustion phenomena, the timing of the valve will be reduced or can be increased. This will improve the efficiency of the engine and also the emission standards of the IC engine. Advantages: low fuel consumption, obviously जो emission हो रहा है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी. Power and efficiency will improve and reducing pumping losses.
डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, हाई वियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इस्तेमाल होगा उसके कारण से ये वियर और टीयर के चांसेस वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। द लास्ट फिनोमेना विच इज करेंटली यूजिंग टर्बोचार्जर्स। व्हाट इज द टर्बोचार्जर? Turbochargers is a basically system which increase the quantity of intake air by using the power from exhaust gases. So in turbocharging, there is a turbine used. This is the diagram. The turbine is used which receiving the hot gases from tailpipe. These hot gases will provide their power to turbine, and this turbine rotate the shaft, and this shaft and the compressor is mounted on the same shaft which compress the air which is supplying to the engine. If the quantity of air is supplying, obviously the quantity of fuel also will increase, and high quantity of air and high quantity of fuel will produce high amount of power, and more pressure of the air will ease to mixing of air and fuel and produces higher efficiency. Advantage and disadvantage will be same as per the all three advantages same. Conclusions. Here, internal combustion engine are among the most important engineering applications. The theory of application either depends on diesel or auto cycle. They are categorized either according to the operating cycle or due to the mechanism of working. Each type of engine has some advantage over the another one. Thus, the selection of appropriate engine requires determining the condition of application. कैसी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप इंजन डिसाइड कर सकते हैं. Despite the green hype, internal combustion engine with its latest and advanced technology will keep powering vehicles for the feasible future. ये जो ग्रीन जो ट्यूबनल है हमारा, उसके कुछ अगर रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ दिया जाए तो हमारे आईसी इंजन में आज भी बहुत सारे एडवांसमेंट चल रहे हैं और फ्यूचर में भी वो इन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो आपके साथ बना रहेगा. थैंक यू वेरी मच सर फॉर लिसनिंग मी. इफ anybody want to correct me for some statement or question, please welcome. ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. एनीवन? अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय सेशन. Okay, thank you very much to all. Leo sir, you can continue. हाँ सर. ओके. Today I am going to give a small PPT on composite material. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र सर एंड पंकज सर का कि इन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया बोलने का. ओके, तो लेट वी स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट? Yes sir. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि why we are moving towards composite materials? Why not we are satisfying from our pure metals, non-metals and other materials which already exist in this earth? तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हम नए चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. हर चीज़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है हम मटेरियल के भी ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. और अगर आप हिस्ट्री भी देख लेंगे, इफ़ यू आर गोइंग बैक टू आवर हिस्ट्री ऑल्सो, मटेरियल के ही हिसाब से हमने अपने सारे चीज़ों को क्लासीफाई किया है. ब्रॉन्ज एज है ना, स्टोन एज, जब हम पत्थरों का यूज़ करते थे तो स्टोन एज का नाम आता था, है ना. तो ये जो मटेरियल है, मटेरियल का रिश्ता हमारा अभी से नहीं है, ये बहुत सालों से, जब से हम ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आया है इस अर्थ में तब से ये चला आ रहा है. ओके, तो लेट्स इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स. तो आज मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस मटेरियल के बारे में, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल वी नेवर गोइंग टू स्टडी दिस कंपोजिट मटेरियल्स. तो
आज के सेशन में हम ये फॉलोइंग कंटेंट्स रखे हैं, इसका डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फिर एप्लीकेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन और एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो व्हाट इज एक्चुअली दिस कंपोजिट? कंपोजिट है क्या? व्हेन वी आर गेटिंग टू और मोर केमिकली डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा केमिकली डिफरेंट मटेरियल्स when combined microscopically, not a atomic level, only macroscopic level, मतलब by human eye we can see the difference of these mixing and give some useful material। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो हमको मटेरियल मिलेगा उससे हम कुछ यूजफुल काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने मिला दिया और कोई काम का नहीं हो तो फिर क्या मतलब ऐसा मटेरियल का। तो दिस थ्री क्राइटेरिया इज गोइंग टू सेटिस्फाई फॉर दिस कंपोजिट मटेरियल। फर्स्ट इज both are chemically different material, even we are going to add two or more materials, then they are chemically different, there is no same constituents। Second criteria is when we are going to mix these materials, they are not going to mix in atomic level or in crystal level, only मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब ये मिलेंगे, नो डाउट ये मिलेंगे, पर ये हम देख सकेंगे। मतलब हमारा जो नेकेड आई है, इस नेकेड आई से हम उसको विजिबल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंक्रीट का मिक्सचर जो रहता है उसमें आप गिट्टी देख सकते हो। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कंक्रीट पेबल फॉर्म्स में जो रहता है और सैंड, सीमेंट, ये सब आप देख के वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। और थर्ड जो क्राइटेरिया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई यूजफुल चीज़ें हम उससे कर सकें। दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू एक्चुअली गेटिंग यूजफुल फॉर मैनकाइंड, दैट इज नोन एज कंपोजिट मटेरियल। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल होंगे तभी हम उसको कंपोजिट मटेरियल कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो मटेरियल को हमने मिला लिया और काम खत्म, नो। व्हेन वी आर गोइंग टू मिक्स टू और मोर मटेरियल्स, it have mixed according to macroscopically, not going to chemically mixed, and also by making these constituents we are getting some useful properties। okay, this is the definition of composite material। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो फ्रॉम नेचुरली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। नेचुरली आपने वुड को तो देखा ही होगा, ये आपको दिख भी रहा है ये स्क्रीन में। दिस इज वुड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स विच वी आर यूज्ड एज अ कंपोजिट मटेरियल। आपको हो सकता है ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, वाई दिस वुड इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट मटेरियल। अगर आप इस स्ट्रक्चर को या इस फिगर को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में फाइबर्स दिख रहे हैं और इनके बीच में कुछ मटेरियल दिख रहा है ना। तो दिस इज एक्चुअली अ कंपोजिट। मतलब यहाँ पे आपको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, मतलब दिख जा रहा है आराम से। अगेन यहाँ पे सेम एक और एग्जांपल देखिए आप, बोन्स में भी यहाँ पे ऐसे फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। और ये लिंगनाइट है ना, जो जनरली ये लैंगनिंग में ये फाइबर्स रहते हैं। आप लोगों ने अगर जो नॉन वेज खाते हैं उनको पता भी होगा, है ना। आप लोग खाया भी होगा हो सकता है इस बोन को कभी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ग्रेनाइट। दिस इज एक्चुअली अ रॉक मटेरियल। रॉक मटेरियल आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप दो अलग अलग प्रकार के पत्थर से मिला हुआ है ये, और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। और इससे आप देखा होगा कि बहुत जगह पे जहाँ पे कॉस्टली सरफेस दिखाने रहते हैं आपको, आप जनरली ये ग्रेनाइट ही बनाते हो वहाँ पे।
मैन मेड, दिस इज, जो अभी एग्जांपल आपने देखा, दिस इज अ मैन मेड नेचुरल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मैन मेड टाइप, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इज अ कॉन्क्रीट, वन ऑफ द गुड एग्जांपल दैट वी आर सीइंग इन एवरीवेयर। जनरली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे आप देखते हो इसको। तो यहाँ पे सैंड है ना, और सीमेंट और जो पेबल्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे गिट्टियाँ होती हैं, इनको मिक्स करते हो आप, और उसको, उसी को क्या कहते हो आप, कंक्रीट कहते हो। तो ये जो सैंड है और सीमेंट है, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स का काम करता है। मतलब ये क्या है बेटा, आपका मैट्रिक्स है। और जो गिट्टी है, दैट इज एक्चुअली अ पार्टिकुलेट फॉर्म्स। किस फॉर्म में है, पार्टिकुलेट फॉर्म में है। अनदर एग्जांपल इज अ प्लाईवुड। प्लाईवुड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेयर बाय लेयर्स, है ना, है आपका मटेरियल, और उसके बीच में ये ग्लूड है। दूसरा एग्जांपल देखिए, फाइबर, और ये आज के डेट में हर जगह पे विंडशील्ड में यूज होता है जनरली। एंड अनदर एग्जांपल इज अ सीमेंट, दिस इज एक्चुअली यूज्ड एज अ टूल मटेरियल। और जो टूल्स के बारे में जानते होंगे, मैकेनिकल, आप सब मैकेनिकल वाले ही हैं, तो आप ये टूल्स को टूल मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है सीमेंट, है ना। सीमेंट इज बेसिकली अ सेरेमिक्स और मेटल का मिक्सचर है। और इसमें जो सेरेमिक्स होता है वो फाइबर के फॉर्म में होता है, और जो मेटल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। Basically, very pupils is confused from why this composite not same as alloys, not same as any compound. तो अगर आप उन सारे मतलब कंस्टिट्यूएंट्स को जरा ध्यान से देखेंगे, एलॉय या फिर कंपाउंड्स, वहाँ पे जो मटेरियल मिल रहा है आपस में, वो केमिकली मिल जाते हैं। दैट इज गोइंग टू मिक्स इन एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। और उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आपको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप उसको देख पाओगे। नॉट इन केस अज लाइक अ नॉट इन केस लाइक अ कंपोजिट्स। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में कि ये क्यों इनसे अलग है। तो वो 3 डिफिनीशंस जो मैंने इनिशियली बताया था आपको, उसी से आप ध्यान कर सकते हो। पहला क्या है, केमिकली डिफरेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या है आपका, कि नॉट गोइंग टू मिक्स इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मिक्स होना चाहिए। और थर्ड जो है, यूजफुल प्रॉपर्टीज मिलना चाहिए, है ना। व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंपोजिट्स। और आज अगर आप आसपास चारों तरफ देखोगे तो हर जगह पे कंपोजिट मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हो। अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे अगर आप चेयर में बैठे होगे या वुड के चेयर में बैठे होगे तो वहाँ पे हो सकता है प्लाई यूज़ हुआ होगा। अगर आप जिस टेबल में आप बैठे होगे, यहाँ पे आपका कंप्यूटर होगा या फिर आपका मोबाइल रखा होगा या किताब रखी होंगी, वो दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम अ कंपोजिट। जिस गाड़ी से आप आ रहे हो, या आप बाइक से आ रहे हो या कार से आ रहे हो, तो आप वहाँ पे भी कंपोजिट मटेरियल यूज़ कर रहे हो। मतलब देखा जाए तो अगर आप सुबह उठते हो तो कोई चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, से लेके जो आप डे टू डे मतलब अपने दिनचर्या में जो चीज़ें कर रहे हो, वहाँ हर जगह पे कंपोजिट मौजूद है ना। तो देखा जाए तो ये चारों तरफ आपके मटेरियल्स ये यूज़ हो रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है यूज़ होने का। फर्स्ट रीज़न जो इसका यूज़ होने का फर्स्ट रीज़न है कि ये जो है वही स्ट्रेंथ और वही स्टिफनेस प्रोवाइड करता है जो आपका अच्छा मेटल देता है। विद द मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, इट्स गोइंग टू आल्सो रिड्यूस इट्स वेट। मतलब इसका वेट भी उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे स्टील को अगर आप कंपेयर करोगे कंपोजिट के साथ, एक सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्टील जो है वो आपका उसका वेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है और स्टिफनेस है उस कंपोजिट में रहेगा, लेकिन उसका वेट क्या होगा, घट जाएगा। तो
फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ये लुक से लेके स्ट्रेंथ से लेके स्टिफनेस से लेके हर एक जगह पे आप इस चीज़ को अगर प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक जीप का बॉडी है। इस बॉडी में आप देखते होंगे कि डॉट डॉट का फॉर्म में ये पेंट्स लगे हुए हैं। दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कंपोजिट और इसको हम कैल्वर कोटिंग कहते हैं, जो कार्स में जनरली यूज़ होते हैं। इसके अलावा एरोस्पेस सेक्टर्स में जैसे रॉकेट्स हो गया, है ना। आप लोग अभी देखते होंगे कि मतलब लड़ाइयों के लिए ज़्यादातर वी आर बेसिकली डिपेंड ऑन दीज मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, है ना। जो आपका एरोप्लेन मतलब एयर फाइटर प्लेन्स है, उन सब पे भी हम जनरली आजकल डिपेंडेंट है, नॉट इन आर्मीज, है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है शूट करने के लिए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। और इसमें भी हम कंपोजिट मटेरियल यूज़ करते हैं। अनदर इज एंटीना एंड सो मेनी स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवे कोचेज में भी आजकल यूज़ होने लगे हैं। ब्रिज बनाने टाइम में भी हम आजकल यूज़ करने लगे हैं। डैम्स, शिप्स, बोट्स और इवन बायोमेडिकल इंडस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी का पैर टूट जाता है, तो पैर टूटने के बाद उसकी हड्डी मान लीजिए खराब हो गई, तो वहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट जो रहता है वो जनरली क्या रहता है, कंपोजिट मटेरियल ही रहता है। और इसको हम अलग कैटेगरी में आजकल खैर इन्वॉल्व करने लगे हैं, जिसको बायोमेडिकल मटेरियल्स भी कहते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड मेनी मोर्स, आप सोच भी नहीं सकते हो ना, मैं इस पूरे स्लाइड में आपको दिखा सकता हूँ। इतने जगह पे ये कंपोजिट मटेरियल आजकल यूज होने लगा है और इसीलिए हम इस पे खोज भी कर रहे हैं। सो मेनी प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट, मटेरियल्स इंजीनियर्स आर गोइंग टू सर्च फॉर न्यू एंड न्यू कंपोजिट मटेरियल। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ फाइबर वी आर गोइंग टू यूज। फाइबर शॉर्ट है तो हम उसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट या फिर विस्कर, दैट इज नोन एज अ विस्कर, या तो फिर फाइबर के फॉर्म में। तो इंजीनियरिंग कंपोजिट को जनरली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पार्टिकुलेट, जहाँ पे फाइबर का साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिसको हम विस्कर भी कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है फाइब्रस। तो पार्टिकुलेट्स में दिस इज एक्चुअली टू टाइप, रैंडमली एंड प्रिफर्ड। प्रिफर्ड को हम डायरेक्शनल ओरिएंटेड भी कहते हैं। रैंडमली जैसे आपने कंक्रीट में देखा होगा, जो गिट्टी रहते हैं, गिट्टी इज एक्चुअली वर्क एज अ पार्टिकुलेट हियर। उसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, वो कहीं पे भी रहता है। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज रैंडम एंड अनदर इज डायरेक्शनल। यहाँ पे आप डायरेक्शन बेसिस पे देखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे स्लाइड्स में छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं, जिसको हम विस्कर कह रहे हैं, वो एक पैटर्न में रखा गया है। ओके, तो particulates has two types. One is randomly oriented and another is directionally oriented, जिसको हम preferred orientation कह रहे हैं। Next is a fibrous. Fibrous मतलब यहाँ पे जो मटेरियल है, जो फाइबर है, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो का मतलब वन ऑफ द डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस आपके फाइबर में है, जैसे लेंथ हो गया और डायमीटर हो गया, तो सबसे बड़ा वाला लेंथ एंड सबसे स्मॉल डायमेंशन, बिग डायमेंशन अपॉन स्मॉल डायमेंशन इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो जो फाइबर का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर। तो सिंगल लेयर में यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही लेयर में आपका फाइबर बिछा रहेगा। और मल्टी लेयर में क्या है, उसी को आप क्या करो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाइए। जैसे आपका बुक का एक पेज है, दैट इज अ सिंगल लेयर। और इस सिंगल लेयर को अगर आपने जोड़ते गए मल्टीपल पेजेस अगर आपने इसमें लगा दिया तो वो मल्टी लेयर्स हो गए। अब सिंगल लेयर में भी ये दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस, जहाँ पे फाइबर्स आपका कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब जहाँ से आपका डायमेंशन चालू हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहाँ क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में, कंटिन्यूअस,
जैसे आपके पेज में लाइंस रहते हैं ना, लाइंस एक जगह से लास्ट एंड तक रहता है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूस। अगर इसी को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में भी अगेन क्लासिफाई किया गया है यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल में क्या रहेगा, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। जैसे हम जैसे कोई चीज़ को स्टिच करते हैं तो जनरली जो अगर हम स्टिच कर रहे होते हैं तो एक ही डायरेक्शन में स्टिच करते हैं, लेकिन वही अगर आप मशीन्स को देखोगे तो वो दो डायरेक्शन में क्या करता है, स्टिच करता है, तो दैट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल। डिसकंटिन्यूअस में अगेन ये दो टाइप के होते हैं, रैंडम एंड प्रिफर्ड। मल्टी लेयर में ये दो टाइप का होता है, अगर एक ही डायरेक्शन में अगर आप एक के ऊपर एक लेयर करते जा रहे हैं तो दैट इज लैमिनेट। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंजीनियर्स लोग के लिए, जिसमें रिसर्च किया जाता है, लैमिनेट्स। अनदर इज अ हाइब्रिड लैमिनेट्स। हाइब्रिड लैमिनेट और लैमिनेट में यही अंतर है कि लैमिनेट में एक ही डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, मटेरियल को या लेयर्स को प्लेस करते जाते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, उसका डायरेक्शन ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनली रहता है, मतलब वो उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपोजिट। मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किए हमने इसको, एक तो पार्टिकुलेट्स और दूसरा आपका फाइबर्स। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, व्हाई वी आर यूजिंग दीज फाइबर्स, क्या रीजन है फाइबर यूज करने का, व्हाट इज द रीजन वी आर गोइंग टू यूज इन अ फाइबर फॉर्म। जब हम फाइबर की बात कर रहे हैं, क्यों हम इस फाइबर के फॉर्म में यूज करते हैं, क्यों हम इसको बल्क में नहीं यूज कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। क्यों क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका बेटा सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो फाइबर रहता है, फाइबर का डायमेंशन बहुत छोटा होता है, तो जब हम इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको बल्क में करेंगे और टेंसाइल लोड लगाया तो तुरंत टूट जाएगा, मतलब इसका मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस बल्क फॉर्म में बहुत कम होता है। और जबकि जब इसका डायमेंशन छोटा रहता है तो इसका जो मॉडुलस है वो क्या होता है, बहुत कम हो, ज़्यादा होता है ना। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो ग्लास में देखिए, जब अगर हम बल्क में लेते हैं तो इसका मॉडुलस जो रहता है, दिस इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाया है। तो बल्क में ये देखिए 0.7 to 2.1 ही है, जबकि फाइबर में इसकी कितनी बढ़ गई है, 3.5 से 4.6 हो गया। तो इसी रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, फाइबर यूज़ करते हैं, फाइबर के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। ओके, और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बल्क में हम क्यों वो प्रॉपर्टी नहीं पा पाते हैं जो फाइबरस में पाते हैं। Reason behind, when we are going to manufacture these material in a bulk form, there is some imperfection, मतलब कोई भी चीज़ को हम परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। मतलब अगर कोई भी बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही जाता है, मतलब देयर इज अ सम इम्परफेक्शन, ब्लो होल्स, और इसी की वजह से क्या होता है, वो कमज़ोर होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज हियर। और एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कंपोजिट्स जो मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर मैं स्टील की क्वांटिटी लूँ सेम स्ट्रेंथ की कंपोजिट मटेरियल के साथ, तो वेट में भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, कंपोजिट में। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंपोजिट मटेरियल में, क्योंकि इसका वेट भी प्रोपोर्शनली क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मॉडुलस, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे सेक्शन मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस भी क्या होता है इसका, काफ़ी अच्छा होता है। वेट इसके काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं, मैंने जैसे बताया आपको। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, डैम्पिंग प्रॉपर्टी। जैसे आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई फास्ट बॉलिंग करता है तो कभी कभी बैटिंग करने वाले का हाथ में काफ़ी
छन्नाहट आ जाता है, मतलब वो बैटिंग करते हैं तो उनके हाथ में झटका आ जाता है। अगर वो सेम सिचुएशन अगर आप सोचिए, अगर लॉन्ग टेनिस का कोई प्लेयर खेल रहा होगा तो क्या होगा। अगर लॉन्ग टेनिस का प्लेयर खेला और वो कंटिन्यूसली शॉट मार रहा है और उसमें डैम्पिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका जो जो रैकेट है, रैकेट से आपके हाथ में बार बार क्या होगा, झटका लगेगा, है ना। तो वो ज़्यादा दिन नहीं खेल पाएगा, फिर पता चला 1 साल में उसका बॉडी नॉट कंफर्टेबल। जैसे अभी आप देखते हो रॉजर फेडरर हो गए, नडाल हो गए, डिजोविक हो गए, ये सब जो इतने लंबा साल इनका कैरियर है, ड्यू टू मतलब यही सब प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि जो उनका रैकेट है वो दैट मच परफेक्ट, वेट भी कम है, वेट भी कम है, देयर इज नो डैम्पिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस टू वियर। जैसे आपने देखा होगा ब्रेक पैड में जनरली आप ऐसा मटेरियल लगाना चाहते हो कि जो वियर को रेजिस्ट करे, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे आपको इंसुलेशन देना है बोथ टाइप, मतलब आपको बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देना है। सपोज करिए, जैसे अगर आप कंट्रोल सरफेस के हिसाब से देखते हो, ना अंदर से बाहर जाने देना है ना अंदर से बाहर, तो उसके लिए भी ये अच्छा मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में भी ये रेजिस्ट कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा रॉकेट जब बहुत तेजी से शूट अप होता है ऊपर की तरफ, तो एयर टकराता है कहाँ पे, नोज के, रॉकेट के नोज में एयर टकराता है और सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू मेल्ट, मेल्ट हो जाएगा वो। तो फिर आपका जो रॉकेट है वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसे जगह पे हम जनरली क्या करते हैं, कंपोजिट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इवन इंसुलेशन के लिए, जैसे आपको आवाज़ नहीं चाहिए, है ना, तो भी हम क्या करते हैं, कंपोजिट मटेरियल यूज़ करते हैं। इवन एस्थेटिक लुक्स के लिए, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन भी आपको नहीं चाहिए। जो हर वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जनरली चाहिए रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह से परफेक्ट है, इट हैव लिमिटेशंस आल्सो। नॉट ईच एंड एवरी मटेरियल इज परफेक्ट। तो फर्स्ट आई वांट टू गिव द बेसिक लिमिटेशन ऑफ दिस कंपोजिट मटेरियल। और ये कंपोजिट मटेरियल का जो डिसएडवांटेज है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, जब हम दोनों मटेरियल को मिला रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मिला रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मिलाने पे क्या हो रहा है, इट्स नॉट अ परफेक्ट मटेरियल, मतलब ये परफेक्ट नहीं है मतलब। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिमिटेशन के फॉर्म में हम बता रहे हैं, इसको एन आइसोट्रॉपी, मतलब एन आइसोट्रॉपी मतलब हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। जैसे मान लीजिए देयर इज अ पेन, जैसे ये आपका पेन है, इस पेन को आपने टेंसाइल लोड लगाया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या होगा, इसका कुछ मॉडुलस आएगा, यंग्स मॉडुलस। अगर मैं वाई डायरेक्शन में भी इसको खींचूंगा, वाई डायरेक्शन में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, इसका यहाँ पे यंग्स मॉडुलस अगर चेंज आया, दैट इज मीन इट्स एन आइसोट्रॉपिक। तो कंपोजिट मटेरियल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। रीज़न, बिकॉज केमिकली ये हर जगह पे देखा जाए तो मिल रहा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मिल रहा है, तो हर जगह पे अलग अलग है। तो एन आइसोट्रॉपिक है ये। और आपको पता होगा कि एन आइसोट्रॉपिक का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कि जैसे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने यही एज्यूम किया होगा कि ये आइसोट्रॉपिक है मटेरियल, मतलब हर डायरेक्शन में इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम। पर एक्चुअल में जो कंपोजिट मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी समझना बहुत ही डिफिकल्ट है।
वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आप सिंपल मैथमेटिक्स से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इट्स बिकम अ टफर। अनदर डिसएडवांटेज इज नॉन होमोजीनियस। अगेन मैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में जाना चाहूँगा। वहाँ पे ये सेम आपने एज्यूम किया होगा कि आपका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है, मतलब हर प्रॉपर्टी, हर पॉइंट में प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैंने आपको जो पेन दिखाया था उस पेन पे वापस से हम चलते हैं, है ना। तो इसका जो बॉटम एरिया है, बॉटम सरफेस है, और इसका टॉप सरफेस है, अगर ये दोनों सरफेस को मैं कंपेयर करूंगा तो टॉप और बॉटम दोनों जगह पे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो ये प्रॉपर्टी डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, अगेन इट्स बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज, इट्स बिकम डिफिकल्ट टू मेक अ मॉडल जिससे हम समझते हैं इसको। तो नॉन होमोजीनियस होने की वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हर जगह पे अलग अलग है। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, अगेन नॉन होमोजीनियस। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इजीली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको कॉस्ट लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, अगेन बिकम कॉस्टली। मतलब अगर आप समय दे रहे हो उसको तो आपका टाइम भी तो लग रहा है, समय लग रहा है, तो उसमें आपका पैसा भी तो लग रहा है, टाइम दे रहे हो तो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज कंपोजिट मेटल का जो होता है, इसमें पैसे बहुत लगते हैं। जैसे आपको मैंने बताया मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, मॉडलिंग करना है, दिस बिकम अ डिफिकल्ट। और इसके अलावा इट्स डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट, मतलब ये सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपका बनेगा नहीं, यू हैव टू मेक विथ अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इतना सिंपल नहीं है बनाना भी। इसके अलावा जो कंपोजिट मेटल का डिसएडवांटेज है वो है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, रेसिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे। आप लोगों ने ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में पढ़ा भी होगा कि जब दो मटेरियल में अगर हमने टेम्परेचर दिया तो एक में टेंसाइल और दूसरे में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। तो सोचिए अगर कोई मटेरियल आपने ऐसे यूज़ किया है और उसका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर सडन डिक्रीज और इंक्रीज हो गया, जनरली ये होता ही है, तो क्या होगा, देयर इज अ थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में ही क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं, एक कंप्रेसिव दूसरा टेंजाइल। तो सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर, दिस इज अगेन वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। और जो जनरली लैमिनेटेड कंपोजिट्स में मिलता भी है, ये वेरी सेंसिटिव, वहाँ पे बहुत सेंसिटिव होता है। और जो लास्ट लिमिटेशन है इसका, मॉइस्चर इफेक्ट, मतलब ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और क्या करता है ये, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और क्या, इन्वायरमेंट को सप्लाई भी कर देता है। दोनों प्रकार के इसमें इफेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल के जो भी कंपोजिट्स आप यूज़ कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ अ कंपोजिट मटेरियल। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी कंपोजिट्स में पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि गो फॉर आ स्वयं कोर्स। जितना भी आज मैंने यहाँ पे मटेरियल आपको प्रेजेंट किया है, दिस इज टेकन फ्रॉम अ एम तिवारी सर लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट मटेरियल, और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। आप भी ज्वाइन करिए और उसको एंजॉय करिए मेरे हिसाब से। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स, इफ एनीवन इज लिसनिंग। I हेलो। think each and yes, sir, yes, sir. I think each and everyone is listening very carefully, and I think there is no any doubt in anyone. A great ओके सर। thanks to our both of young champ.
of the department, Liju sir and Pravesh sir, both of them have delivered a very wonderful lecture today. And with this lecture, we are ending our 5 days FDP program. And as per instruction of Pankaj sir, we will uh, we will get we will conduct a get to tomorrow, a valedictory function, and for that we all notify to each and everyone. So thank you very much, sir. Will you continue or will you end, sir? Will you, sir? Yes sir, end sir, end. Okay. थैंक यू सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कंपोजिट से रिलेटेड, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। आप चाहे तो सर मुझे पूछना है, वैसे मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूंगा इसको। ओके ओके ठीक है। Thank you, sir. तो कल हम लोग फिर से एक बार 3 बजे जो है गेट टू करेंगे सेमिनार हॉल में। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके।